but look at that. Oh, it just Beautifully cooked. Beautifully. अभी पता चला है कि लेपर्ड जो है ये यहाँ से एक थोड़ा सा दूर एक पहाड़ है. मतलब मौसम के बारे में हम क्या बोले? yes. It's the one thing we cannot make you experience. Year of my life. कुछ है आगे. तो 2.5 घंटा हमने वेट किया है. Totally worth it, है ना? ऐसे मटन गिरेगा बोन से तो. खाने में क्या है, पर आप खाना तो हमेशा ही देखते हैं because that's our core. खाने के बगैर कभी एपिसोड नहीं होगा, लेकिन हमेशा उस खाने तक पहुंचने तक एक जर्नी होती है, एक एक्सपीरियंस होता है. What we want to do is experiential experiences. If there is such a thing. If there is such a thing for us and eventually for y'all. Come along, let's see what's happening. और ये जो सफ़र है ये backwards जाता है, so let's rewind. तो बहुत सुबह है, बहुत जल्दी है सुबह की. और अभी सुबह हुई नहीं है. हाँ. क्योंकि अभी सूरज आया नहीं है. हाँ, और बहुत ठंड है. बहुत ठंड है. तो अगर आप जब भी यहाँ आएँ जवाई में, डेरा में, तो स्पेशली इन द विंटर सीजन्स जस्ट बी लेयर्ड प्रॉपर्ली. अभी हम जा रहे हैं लेपर्ड सफारी पे. या वैसे तो ये काफ़ी मतलब वैसे ड्राई इलाका है. इट्स नॉट थिकली फॉरेस्टेड, इट्स नॉट वुड्स. These are hills and they're totally dry. But it's a very elusive animal. Very extremely elusive. Very shy, does not like to be seen, does not like to show itself. कहीं पे छुप के हमको देख रहा होगा, हमको पता नहीं होगा बिल्कुल. अरे वो तो once we enter their territory, they all are looking at us. But honestly, this माहौल is so good. It is. It's very peaceful. I'm hoping leopard दिखे, but ना भी दिखे ना. So I feel like it's still an experience, and this ride is super fun. But let's see, we are prepared for it. We're super excited for it. Year of my life. कुछ है आगे. अरे रैबिट है, रैबिट. Sun is rising, and as soon as you enter the territory of the leopard, it almost feels like a Mad Max world. Mountains all over, and we are driving in the middle of the mountains. It's that dry kind of beauty. हरा भरा जंगल नहीं है ये, एकदम रूखा सूखा पहाड़ों वाला टोपोग्राफी है यहाँ पर. And so the dogs that you seeing around us are apparently very it's not even centuries, it's like thousands of and more than thousands of years old volcanic rock. अभी पता चला है कि लेपर्ड जो है ये यहाँ से एक थोड़ा सा दूर एक पहाड़ है, उसका नाम है ब्लैक हिल. और वहाँ पर एक गुफा है दूध वाला. So there's a leopard that is spotted around that black hill area. तो जाके देखते हैं अभी. चलो उस लीड को फॉलो करते हैं. Let's hope we get lucky. Alright, are we in one piece? Yes. Finally, इतने रोलर कोस्टर राइड के बाद सुबह ठंड में उठने के बाद we spotted a leopard, and it's just beautifully just posing for all of us. There are about 1, 2, 3, 4, 5, about 8 jeeps over here. It's posing for all of us.
if it will lie down, no, तो हमको पता भी नहीं चलेगा वहाँ पे leopard है. It can merge so beautifully in this. So we've been told, as per the official census, there are about 45 leopards in this entire area, in this vicinity. But in the place that we are going around surveying in our safari, there are about 12. 12. So it's a super rare chance. Absolutely. It's like a really thin line. You have to have real good luck. लगभग 3.5 घंटे की बम्पी रॉकी राइड के बाद हमने फाइनली बैक ब्रेकिंग राइड के बाद हमें फाइनली लेपर्ड की साइटिंग हो गई. We spotted Jeewada female leopard on Black Hill. So yes. the tracker was spot on. Reclining royally. Yes, absolutely. But complete and you know one of the success. things that there's so much of anticipation in when you go to the safari, but when you actually spot the animal, you can't do you cannot shout and you cannot be like ore dekho, because you can't express. You have to like because you really have to control it, and you have to respect their surrounding. But that's how you should enjoy the wild. Yeah. Wildlife should be in the wild, and let's keep distance and respect each other's spaces. As always. तो इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए हमारे साथ हितपाल भैया और विनोद भैया थे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. आपकी भाषा में कैसे बोलते थैंक यू? राम राम. जय सिया राम. हम हैं डेरा जवाई में. It's about 3.5 hours from Udaipur, and it's about 7 hours from Jaipur. It's a small place, but it's that charm of being a small place in a small village in the middle of pretty much nowhere. Quaintness. It's so quiet. मतलब गांव में कोई बात करेगा तो यहाँ सुनाई देगा. हाँ, 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगा यहाँ पे. अच्छा यार, I like this slowness. Yeah. Especially. It's really important. After we just keep shooting, work. And not just us, we are anyway travelers. Yeah. But for city folks, you need exactly. to slow down, you need to pause and take a macro look at your life. अभी एक concept है ना जो Italians बहुत ही seriously लेते हैं. Dolce far niente. Sweetness of doing nothing. Correct. तो अभी for the next few hours we're going to do that. We will do nothing. We will just look at the grass, the sky. यहाँ पर हम जहाँ रह रहे हैं, they are like small tents, but they are not fully कपड़े का tents. So it's like a cottage. / tent. A small cottage room, but the roof is fabric, so it gives you that feeling of pitching a tent in the middle of the forest. But it's comfortable, and बाहर की जो ठंडी है वो अंदर नहीं महसूस होती है. It's pretty warm. Yes, it is warm. So after a slow day, we're going to wait for the slow cooking and slow eating, hopefully. It's been a rough beginning, but I think the rest of the day we should just take it as it comes. Adventurous beginning. One moment at a time. Yes.
I'll tell you what, Prachi, है ना, Nagesh and Vandana are going to be very, very, very jealous. Absolutely. क्योंकि we are having a candlelight dinner. Absolutely, and not just any candlelight dinner. It's Yes, super rustic. Absolutely. बिल्कुल ठंड है, यहाँ पर अलाव जल रहा है Take a moment and तारों के नीचे. क्या बात है. And right in the middle of wilderness. Yeah, आसपास genuinely कुछ नहीं है. And that is the idea. कुछ नहीं होना चाहिए. And I'll tell you what, before all the non-veg on the table ना मेरे को केर सांगरी से start करना है. So इरशाद. this time I will be nice and You're always nice. serve you some This setup demands some chivalry. and very polite and courteous behavior. Absolutely. You can dig into your bajra roti. Yes, तो मैं खा रही हूँ यहाँ की बहुत लोकल, बहुत देसी बाजरे की रोटी. और Mohit is going to eat the Wheat. Is that a fulka? Yes. Oh, let's go for it, man. रोटी Let's एकदम just कर से टूटी है. Ker Sangri. Oh my God. किसी भी जगह का जो लोकल खाना है वो लोकल सेटिंग में खाना चाहिए, जैसे कि यहाँ, ना कि बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट में जहाँ बहुत टूरिस्ट आते हों. क्योंकि ये Oh wow. खाना लिटरली आज हम 6 लोगों के लिए बना है, 4-6 लोगों के लिए बना है, बड़ी मात्रा में नहीं बना है. And it's very तो fresh. उसका- It's just made. Literally farm to table ये खाना हुआ है. And with a good 2.5 hour wait for this, Spread. Which is actually worth it. totally worth it. So, coming to the Ker, it is very lightly spiced. Onion ka base gravy mein. A lot of people don't know that there are two ways of having Ker. If you would care to explain. ये बरसात के समय में हरी होती है, उस समय अलग तरीके से बना के खाया जाता है. और एक बार ये मौसम चला गया तो इसे उतार कर सन ड्राई किया जाता है, पहले बॉईल करके फिर सन ड्राई करके स्टोर किया जाता है, और फिर जब आपको खाना है तो इसे रीकुक किया जाता है. तो अभी That's the second way of eating it. which is how we are eating it right Right now, absolutely. We got itna carried away हो गए with the Ker Sangri, we just forgot about the non-vegetarian mutton starters. Yeah. And that this is mutton Sula Sula. mutton. तो सूला यानी कि सरिये पे Skewers बना पे है, बना हुआ. बारबेक्यू. So would you So care I'll- to pass the Sula mutton Sula? Suar. There you go. इस मौसम में बारबेक्यू खाने का मजा कुछ और है. Next level. जंगल में अगर आप मांस खा रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम स्पेंट ऑन चूइंग Chewing it, yeah. एंड गेटिंग द जूसेस आउट. मतलब मौसम के बारे में हम क्या बोले. Yes. इट्स द वन थिंग वी कैन नॉट मेक यू एक्सपीरियंस. मगर अगर आप ये जलती हुई आग और ये धुआं देख रहे हैं तो आई होप आप जहाँ भी हैं No, तो थोड़ा सा इनको तो महसूस कर सकते हैं. experience करने के लिए यहाँ पे आओ. Come to Dera. Have a good safari. Have some amazing food. It's very, very nicely barbecued. Again, lightly spiced. It's lightly spiced कि हमारा tolerance for spice is a little high. नो इट्स स्लाइटली स्पाइस, मगर ओवरऑल ही यहाँ की जो मिर्च है वो जनरली मिर्च तीखी ही है. तो उसका जो टेस्ट है, तीखापन धीरे धीरे जुबान पर चढ़ता है. यू नो इट्स लाइक दैट नशा. फर्स्ट बाइट में तीखा नहीं लगता तो हमको लगता है हाँ बहुत लाइटली स्पाइस्ड है. बाद में वो But it's almost lingering on your palate for a while. Wow. अब होगी हीरो की एंट्री. ड्रम रोल. जैसे राजे महाराजाओं का वो लंबा सा स्वागत होता था. महाराजा धीराज, Absolutely. सो एंड सो पति, सो एंड सो के सरताज आ रहे हैं, आ चुके हैं. क्या चूज कर रहा है?
Please note, per tradition, I am giving Prachi the nalli piece. And I have my favorite piece. Which is? The rib. Very fragrant. Very, very, very fragrant. इसको मैं पहले plain खाने वाला हूँ. The gravy. क्या बोलता है मोहित? Nice. Smooth gravy. This is light and spicy. Yes. But look at that. Oh, it just. Beautifully cooked. Beautifully cooked. Yes. That's typical slow cooked mutton behavior, no? Just falls off the bone. किसी भी चीज को आप टाइम लेके प्यार से करते हैं. Yes, absolutely. तो पिघलेगी. I'm not missing the tikka spice in this mutton because ये ना मतलब it's rich in flavor. It probably doesn't need that tikka karara jhatka. No, I am. I would have liked some more spice that hits you here. But then the mutton is fabulously cooked. The quality of mutton is also amazing. In most other places, I couldn't take a second helping of the Laal Maans because of the spice. This is probably the one that I'll be able to eat more. हाँ तो खाओ. Because it's not burning my insides. जो 2.5 घंटा हमने वेट किया है, totally worth it, है ना? ऐसे मटन गिरेगा बोन से तो मतलब 2.5 घंटा वो भून के इतना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है. वो मस्टर्ड ऑयल, अनियन, मटन, उसके ऊपर हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट और स्लोली. And then low. स्लोली यार. लेकिन ये सब इंग्रेडिएंट्स तो आपको मिल जाएंगे, पकाने के तरीके भी आप सीख लोगे. लेकिन एक चीज़ के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा, और वो है कि ये जो लाल मांस बना है वो जिस देगची में बना है वो 150 साल पुरानी है. वो आपको कहाँ मिलेगी? 1.5 century old. कहीं नहीं मिलेगी, तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा. So it's a complete legacy meal. Also, you know what I believe that जब पहले के वक्त में जब शिकार विकार पे जाते थे ना, so they used to carry their spices and their ingredients to basically to cook. और वहाँ पे उनको जो मांस मिलता था, especially deer and rabbit and whatever, they used to cook all of it together. तो वो ऐसे उसको कहते थे जंगली मांस. I think this is a more, that's what I feel. It's a more refined version of the jangli maas. It's become Laal Maans. तो आप जैसे टेबल पे बैठ के खाओगे तो लाल मांस ही होगा. So you know what? ये जो slow cooked mutton है मुझे क्या याद दिलाता है पता है? Sundays को ना Dad used to get up and announce कि आज खाना मैं बनाऊंगा. वाह. और वो 11:30-12 he used to start with a drink in his hand and slow cook the out of the mutton. वो बनते जब तक वो टेबल पे आए वो 3:30 बज जाते थे. उसको भुना के, अनियंस को भुना के, मटन को पूरा ऐसे प्यार, लव, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट. तब तक भूख भी अपने चरम पे पहुंच. अरे भूख was so in a way this really takes me home. डैडी के हाथ का. It's been an eventful day. You know, getting up like really early in the morning, सफारी का एक्सपीरियंस, फिर वापस आए, थोड़ा हमने चिल किया, अनवाइंड किया, and then ending the day with this beautiful, delicious, absolutely memorable meal. कुछ चीजें जो होती है ना वो रेटिंग की मोहताज नहीं होती. Absolutely, and that you cannot. And you just have to experience. Absolutely agreed. And you're not going to compare them with anything else. बिल्कुल नहीं. और आप एक एक्सपीरियंस को आप क्या ही, है ना, how will you qualify? बात करते अभी भी. अच्छा, मोहित से खाना छूट नहीं रहा है. तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस,
Like, share, subscribe. Subscribe, and if you want to see more such experiences, तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, like she said, and आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है? क्या है? Oh, What is this? it's Is it dipped good? into strawberry का this thing. It's very nice. So this is the point of coming here, experiencing it with the crew. Sharing good food makes good food better. Our producer Harsh, our DOP1 Raj, our DOP2 Pramod Vishwakarma, पूरा नाम ले लिया, हाँ, और And the time right now is 12 a.m. 12 a.m. All of us together. आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है. Pratik, we miss you. Miss you, bro. आपके हेड्स नहीं आए? नहीं आ रहे? देखो जरा प्रमोद जी, प्रेम देखो. चलिए.